चलो, now one more question करो. This one we done, right? Yes. करो. A wire of resistance R is stretched such that radius is halved. Now length का खेल नहीं, we are not playing. We are doing radius is halved. Then we have to go for normal method only. Okay, find the new resistance. Find करो. एक कंडक्टर इज देयर, उसका रेसिस्टिविटी इज रो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, इसका रेजिस्टेंस इज आर, इसका लेंथ इज एल, इसका रेडियस इज आर. ओके, सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस में पाई आर स्क्वायर. ओके, नाउ क्या किया? इट इज स्ट्रेच टू सच दैट रेडियस इज हाफ्ड. स्ट्रेच किया, रेडियस आधा हो गया, r/2 हो गया, एंड रेजिस्टिविटी इज रो. लेंथ चेंज होगा ना, लेंथ विल चेंज, राइट? रेडियस इज हाफ मींस खींचा होगा ना, सो l डैश. नाउ फाइंड न्यू रेजिस्टेंस r डैश. फाइंड करो. r डैश इज रो l डैश बाई पाई इंटू r/2 होल स्क्वायर. अगर l डैश फाइंड करूंगा देन ओनली आई कैन गेट द रिलेशनशिप. फाइंड करो. I'll give options. 2r, 4r, 8r, 16r. Fine. Yeah, 16r is the answer. So L dash के लिए always compression और elongation में what are same, rho is same and volume is same, right? So volume equate करो. Volume is same in compression और elongation में. So volume कितना होगा? Area into length. Okay. So pi r square into L is equal to pi into r/2 whole square times L dash. So pi cancel, r square cancel हो जाएगा. So 1/4 बचेगा. So L is equal to L dash by 4. So L dash is equal to 4L. मतलब 4 times में खींचा होगा, then only resistance the radius got halved. So substitute L dash के जगह में 4L. So rho into 4L. ये for 2 square is 4L, ऊपर आया तो 4 into 4 by pi r square. So 16 rho L by pi r square, and you know rho L by pi r square is nothing but r. So 16r. So whenever compression elongation में volume is constant, method तो always याद रखो. Okay. Now इधर भी radius time में also we have a shortcut to find. Radius also we have a shortcut. Without using volume, we'll have a shortcut. Okay. Shortcut for compressing and radius, stretching radius. Okay. So क्या है? R is equal to rho L by A, right? तो area का केल लेंगे radius बोले तो. So मैं क्या करूँगा? Volume is constant, right? So I am multiplying A and A. So क्या होगा? R is equal to area into length is volume. So rho volume by A square. In terms of radius में क्या होगा? Pi r square whole square. Nothing but rho V by pi square r power 4. Okay. Now आपको compressing or stretching में rho is constant, volume is constant, pi square is constant. मतलब r is inversely proportional to r power 4. Whenever radius you can use r power 4 वाला. So now क्या होगा? R dash by r, the new resistance which we want is equal to उल्टा होगा ना, r by r dash whole power 4. This is the formula we have to use. R dash by r is equal to r. Smaller is nothing but radius, capital is resistance. Capital is resistance. Now check करो कितना हुआ. रेडियस को पहले वाला क्या हुआ? रेडियस इज हाफ, राइट? रेडियस इज हाफ. देखो r dash के जगह में r/2, r कैंसिल, 2 power 4. 2 power 4 is how much? 16. 16 into r is 16r. That ला जाएगा. Okay. So length का direct relation with L square, radius का it is inversely proportional to r power 4. Yeah. चलो. Now till now we studied about the conductor resistance wire. ऐसा पढ़ा ना, cylindrical shape में. Conductor ऐसा shape नहीं है, not necessary, right? It can be cube shape, it can be any shape. Different shapes are there. Different shapes of the conductor का resistance we want to find. Formula is a normal formula, rho L by A.
सो डिफरेंट शेप है. ओके, यू विल सी कैसे डील करेंगे. विल सी. हाँ, देखो, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए क्यूबॉइड, बोलो क्यूबॉइड, is rho. If the resistance across the face, I want the resistance across the face 1 and 2 and 3 and 4. So I'm drawing the cuboid of side A, B and C. Length, width and height. Cuboid ka different dimensions are given. Okay. So phases likho, is first phase, second phase, third phase, fourth phase. Okay. So cuboid is there. I want to find the resistance across the phase 1 and 2. 1 and 2 का फेजेस का चाहिए, मतलब ऑपोजिट फेजेस का मुझे रेसिस्टेंस चाहिए. ओके, एनी ट्रायल निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2. ओके, तो देखो इसका क्या करेंगे. आपको 1 एंड 2 में है ना फेज का, यू पास ए करंट इन 1 एंड 2 में, पास ए करंट. ओके, नाउ फॉर्मूला क्या होगा, रो, रो उसका रेसिस्टेंस रो, राइट. रो एल कौन सा यूज करने का, राइट. एल इज द लेंथ वेयर द करंट इज पासिंग. विच लेंथ, टोटल लेंथ इज हाउ मच, 1 एंड 2 का बीच में लेंथ इज हाउ मच, 1 एंड 2 का क्यूबॉइड का, ए, राइट. ए, सो रो ए बाई रो एल बाई एरिया. एरिया कौन सा यूज करने का, वेयर एवर द करंट इज एंटरिंग दैट एरिया वी शुड टेक, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया. सो इसका 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 एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल शेप का एरिया इज कितना होगा इसका, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, वेयर एवर द करंट इज एंटरिंग दैट एरिया वी शुड टेक. So length into breadth, right? So B into the C, right? So BC. So this is the answer. खत्म. तो same way try करो. Resistance across 3 and 4. 3 and 4 means आपको क्या करेंगे, करंट पास करो इन 3 to 4. नो टेल मी आंसर. Rho B by AC. Good. Rho B by area which with which it is entering, that area we should take AC. समझ में आ रहा है सात्विक अंडरस्टैंडिंग. तो डिफरेंट शेप्स का भी देगा, अंडरस्टैंड करो. चलो नेक्स्ट. देर इज ए हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब. इनसाइड देर इज ए हॉलो है, इनसाइड देर इज ए हॉलो. ये पूरा ऊपर नीचे वाला मटेरियल इज देयर. ओके, सिलिंड्रिकल ऑफ लेंथ एल है, हैज इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी. इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन साइड व्यू, ए इज द रेडियस एंड बी इज बिगर का रेडियस है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब एट द एंड्स एम एंड एन. एम एंड एंड्स का क्रॉस मुझे रेसिस्टेंस चाहिए, एम एंड एंड. So since lengthwise is right, so I'm passing the length, I current pass कर रहा हूँ, I. No fine, देखते हैं. कितना आंसर. M and N phase means along the length we are calculating. हाँ fine. So resistance है, ये पूरा हॉलो है, इसमें तो करंट नहीं जाएगा, ये पूरा हॉलो. Rho L by B square minus A square. Rho L by
By B square minus A square. yes, correct. B square minus A square. Okay, because rho length along which the current is passing m n के चाहिए ना, L लगाया by area. एरिया कौन सा है आपको, इसके एरिया निकाल देने का. वी आर नॉट, करंट इज नॉट पासिंग, that effective area only should take. So pi into bigger square minus smaller area separate किया तो we'll get this which area, right? This only where the current is entering. So that's why we are using pi into B square minus A square. See here, if you see carefully, see wires are like this. Why not like this? So current कैसे जा रहा है, ऐसा 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 जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है. करंट कैसे जा रहा है, zoom 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 घुमा घूम के जा रहा है. वाइंडिंग ऐसा है, वाइंडिंग विल बी सिलिंड्रिकल शेप. ओके, चलो ना करो. Same type of question, but he is asking what is the resistance of the tube between P and Q. मतलब P and Q का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए along this side. मतलब ऐसा, एंड बीच में तो हॉलो है, बीच में हॉलो है. बिफोर कैसे था, ऐसे था ना, बट नाउ आई एम पासिंग लाइक दिस करंट. पी एन क्यू के क्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए. Rho B minus A divided by BL. रो बी माइनस ए डिवाइड बाय BL. नो, रॉन्ग. देखो इधर क्या है, कैसा है, अंडरस्टैंड करो. इफ यू सी केयरफुली, इसमें देखो करंट कैसे पास कर रहा है. करंट तो सर्किल में घूम के जा रहा है ना. ओके, सर्किल में. नाउ एरिया इज चेंजिंग अ कांस्टेंट. देखो इफ यू सी इन साइड व्यू में से देखे तो फर्स्ट करंट ऐसा गया दिस एरिया, बाद में करंट इज गोइंग लाइक दिस एरिया, अगेन करंट इज गोइंग लाइक दिस. सो बिगर बिगर एरिया इज चेंजिंग इन दिस केस में. इसमें कैसे था, इसमें एक ही ऐसा जुम 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 करंट जा रहा है. ओके, बट इसमें कैसे है, व्हेन यू सीइंग दिस, व्हेन आई एम पासिंग लाइक दिस रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस चाहिए ना. सो हियर एरिया चेंजिंग, बड़ा सर्कल वैसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, एरिया चेंजिंग. उस एरिया में डायरेक्टली चेंजिंग वाले एरिया में वी कांट यूज रो एल बाई ए. कौन सा यूज करेगा, कौन सा एरिया, छोटा एरिया ना, बड़ा एरिया ना, वी कांट गेट, राइट. तो उसके लिए आपको छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा, राइट. छोटा सा एलिमेंट काट के फेवरेट वन इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, सो देखो दिस इज द इनर सिलेंडर एंड दिस इज द आउटर सिलेंडर. ओके, इसका लेंथ है एल. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, सो ये अभी सेंटर से मैं क्या करूंगा, आर डिस्टेंस दूर जाके स्मॉल एलिमेंटल सिलेंडर कट करूंगा. इसका लेंथ है एल ओनली. स्मॉल एलिमेंटल लेंथ आई एम कटिंग. ओके, एलिमेंटल सिलेंडर एंड कटिंग, मतलब स्मॉल एलिमेंटल, उसका एरिया तो फिक्स होगा ना, उसका रेजिस्टेंस विल ट्राई टू फाइंड, देन इंटीग्रेट करेंगे टू गेट टोटल रेजिस्टेंस. ओके, इसका थिकनेस क्या होगा, इसका थिकनेस इज डी आर. इसका थिकनेस इज डी आर. ओके, मैं सिलेंडर को बाहर ले रहा हूं. ओके, इसका थिकनेस इज डी आर, इसका लेंथ है एल. ओके, नाउ इसका स्मॉल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर. रो लेंथ, लेंथ कौन सा यूज करेंगे, वेयर एवर द करंट इज पासिंग दैट लेंथ वी शुड टेक, राइट. तो करंट लेंथ किस में, किस एरिया, कितने थिकनेस में जा रहा है, डी आर थिकनेस, राइट. सो रो एल इज डी आर, स्मॉल थिकनेस में ओनली करंट इज पासिंग बाई एरिया. इसका एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, सरकमफ्रेंस इनटू लेंथ, राइट. इसका इसका आर, राइट, दिस आर, राइट. सो 2 पाई आर
into length. समझ में आया क्या वाला? Small resistance we are finding. ऐसा we are adding all cylinders. All cylinder addition को we call as integration. So therefore R equal from where to where we integrate? From A, because ये तो बीच में hollow है ना, A से B तक, A से B तक रो dr by 2 pi rl. नो फाइन, नो बाहर ले लो सब कुछ, ओनली 1 by r dr रहेगा. R is equal to rho by 2 pi 2 pi l integrate 1 by r dr and A to B. So therefore R is equal to rho by 2 pi l in log r to the base e from A to B. So क्या होगा? R is equal to rho by 2 pi l into log B minus log A, log B by A, right? Log B by A to the base E. इसी को sometimes natural log बोलते हैं, right? To the base E वाला को we call sometimes ln B by A बोलते हैं. That's nothing but natural log only, indirectly. So whenever area is changing, we cannot put rho L by A. A बहुत change हो रहा है ना, so we have to go for integration. Okay, so ऐसा questions they can ask in the exams. चलो, copied? हाँ. Effect of resistance, temperature on resistance and resistivity. Effect of temperature. Temperature के साथ, I told you resistance depends on temperature. Means yes, resistance depends on temperature. Okay, so how it depends क्या है? Basic formula anyway tell. R is equal to basic formula in terms of length m, mass of electron. formula बैठ करो that one. हाँ आता है, बोलो शिवंगे. ml divided by e square n square ta. tau a. Tau is the average relaxation time, right? So m l by n e square tau a. Very important formula you have to buy it. m l by n e square tau a. सादिक बोल सकते हो, फिर से बोलो. R equal to formula ml n e square tau a. ml by बोलो ml by e बोलो square फिर से. n e square tau a. हाँ tau a. And L by L को रिमूव किया तो we get rho, right? Rho कितना होगा? m by n e square tau. This is the resistivity, right? Because comparison से आ जाएगा rho L by A को निकालो, will get rho. Now see, resistance depends on temperature. कैसे बोल सकते हो? It depends on n and tau, right? N and tau. N is the number of electrons per unit volume. That is depending on temperature. And tau is also average relaxation time. मतलब इधर से इधर तक without collision वाला time. अगर temperature बढ़ा तो tau will be increasing, right? Or decreasing. Tau will be decreasing, right? So आपको resistance indirectly temperature पर depend हो रहा है. N and tau is a major one. Area, length is all are constant. I'm putting constant. Okay. Now I will see. You tell me, as n increases, what will happen to resistance? Resistance क्या होगा? As n increases? Decreases. Tau increases means? R also decreases. Right? Inverse relation, right? चलो. So पहले हम लोग temperature effect से we will see what will happen. देखो, on increasing temperature, you tell me ionization energy is increasing or not? Ionization energy पढ़ा होगा ना chemistry में? The energy required to remove outermost electron. So मैं temperature बढ़ाऊंगा, ionization energy of the atom will increase or decrease? I'm increasing the temperature, I'm heating the conductor. So electron gains energy, right? Ionization energy is increasing, right? More the ionization of electrons. Okay. Now if the ionization energy of electrons are coming out, मतलब energy आ गया, वो electrons are coming out, number of electrons per unit volume will increase or decrease? Number of electrons per unit volume. एक unit volume suppose 100 is there. So if I increase the temperature, more the number of electrons per unit volume. So n is increasing, right?
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, उसके वजह से फाइनली क्या होगा, n इंक्रीजेस. So from this you understood that as temperature increases, n increases. Now if n increases, what will happen to the resistance? Decreases. Right? इस कहानी की वजह से we are seeing the resistance is decreasing. चलो नेक्स्ट कहानी देखेंगे. On increasing temperature, temperature को I am increasing again. Speed of the electrons will increase or decrease? On increasing temperature, speed of the electrons in a conductor Increases. increases. Okay. If speed of the electrons increases, collisions also increases, free collisions increases. उसके वजह से time between two collisions क्या होगा? Time between two collisions decreases, right? उसके वजह से क्या होगा? Tau decreases. If tau decreases, resistance क्या होगा? Increases. This kahani is saying resistance decreases. This story is saying resistance increases. Who's right? Which is right? According to same temperature, conductor लिया, same temperature increase किया. According to this, resistance is decreasing because n is increasing. According to this, tau is decreasing, resistance increasing. Then who is right? Which one is right? क्या बोले तो both are right only, but उसका effect ये ज्यादा decrease हुआ, ये थोड़ा increase हुआ, then finally क्या होगा? Decrease हो जाएगा, right? So based on the effect we are, which is significant, we have to see. Which is significant, we have to see. That's why we divided into 3 categories. मतलब conductors, semiconductors, alloys. तीनों में we are seeing as temperature increases, what will happen to the resistance we are seeing. Okay. Copy it. You have 11 o'clock, Shivangi, tuition? 10 o'clock. 10:50. 10:30. 10:30. Why you are keeping there only? थोड़ा ज़्यादा करो. Sunday try to थोड़ा extend करो, try करो, because I want to take Sundays more time. 1.5 or 2 hours लेना के देख रहा हूँ. No problem. अगर है तो you can leave, but video you can say if you want like that. I want to take more time. Copy it, Sanvi. Okay. Chalo. Now we will see in metallic conductors. Metallic conductors. Okay. Now क्या होगा metallic conductors में? Otherwise we'll ask 8:30 को, all persons are accepted, 8:30 also we can keep. Okay. Chalo. Metallic conductors में if you see the number of free electrons per unit volume is so large. Already n is so large. मतलब 10 power of 28 to 10 power of 29 per meter cube. मतलब 1 meter cube में इतना electrons are there, like ocean of electrons are there. In the ocean में if you add some more electrons, any effect of the ocean? If you add any one bucket of ocean, nothing, right? So that means on increasing temperature, the increase in n is not significant in conductors. Especially in conductors I'm talking about. N is not significant. मतलब remove कर रहा हूँ मैं इनको. That means क्या होगा on increasing temperature? N increases insignificant हो रहा है. Tau decreases will become significant. This is becoming significant. Then finally क्या होगा? Tau decreases means resistance increases. So in conductors, what will happen? As temperature increases, tau decreases, resistance increases. If resistance increases, definitely rho also will increase. Resistivity also increases. Resistivity also depends on temperature. Normal conductors ये तो मालूम है आपको. Normal conductors में copper, aluminum if you increase the temperature, definitely resistance will increase. That relation. Why it is increasing? We studied today. Tau decreases. God.
Finished? Okay. Now इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ if you see कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का एंड टेम्परेचर ग्राफ. As temperature increases, resistance will increase, right? Non-linear resistance. It can be copper, it can be any metal ka. This is the graph. So sometimes they'll give the graph, they'll tell which type of material it is. Conductor, alloys, semiconductor. डेप्थ में जाओ, ऊपर ऊपर मत पढ़ो, जस्ट फॉर्मूलास पढ़ के मत छोड़ो. लोग कितना एक प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट पकड़ेगा तो that will be equal to nearly 10 to 15 problems you can solve. If you done exact concept, you can catch the many questions. Okay, so ऐसा questions करो. Finished? Okay, चल. Now next one is semiconductors and insulators. में graph ये है semiconductors. So semiconductors में last chapter of the 12th class is semiconductors. Last chapter है. Example silicon and germanium, very famous semiconductors का. Silicon and germanium का. Okay. So देखो semiconductors like silicon, germanium, sometimes carbon and insulators. The relaxation time does not vary much with temperature. In semiconductors में they done experiment and they found that as temperature increases, tau does not vary much. That much vary. मतलब this is becoming insignificant in this. Okay, tau does not vary that much. Okay, the free electron density depends on temperature. That means n is depending on temperature. And they given a formula for semiconductors में, especially for semiconductors, n कैसा increase होगा also they given the formula. मतलब as temperature increases, n is increasing. n कितना increase हो रहा है? अगर मैं 1 degree raise करूंगा, ये n कितना increase हो रहा है? That formula is given by this one. n is equal to n naught e power minus eg by kt. Eg is the energy gap. You will study in semiconductors. K is a Boltzmann constant. T is the temperature. So as temperature increases, finally क्या हो रहा है? As temperature increases, n is increasing, resistance is decreasing. If resistance decreases, rho also decreases. Because tau is insignificant in this. मतलब I can write like this. N is equal to n naught by e power minus है ना eg by kt. Okay, as temperature increases, eg by kt, as temperature increases क्या हो रहा है? eg by kt will increase. Okay, eg by kt will increase means number of charge carriers. Finally क्या हो रहा है? Number of charge carriers will e पर है ना values ऊपर गए तो increase होगा, finally increase होगा. Okay, so that exponential formula ज्यादा नहीं पूछेगा. Okay. So in this way, tau is insignificant. N is only the major factor. So as temperature increases, n increases, resistance decreases. Eg by kt is decreasing, right? So therefore, the n is increasing. So if you see like this, n is equal to n naught by e power eg by kt. Okay, as temperature increases, eg by kt क्या हो रहा है? Decreases, right? If decreases means n is increasing. Right. Okay. So n naught is the initial number of charge carriers. E power minus eg. Eg is the energy gap. We studied in semiconductors. Finished? इसका ग्राफ कैसा होगा? Inverse relation, right? As temperature increases, resistance decreases. Inverse relation. Finished? Huh? Yeah. Now इसका graph will be like this. Inverse relation. As temperature increases,
resistance or resistivity will decrease. Now, third type of material which we are going is alloys. Alloys. Alloys के examples we have to by heart: nichrome, manganine, and constantin. Okay, nichrome, manganine, and constantin. These are alloys. Okay, so इसमें क्या होगा? On increasing temperature, N increases and tau decreases. मतलब दोनों सब बराबर इंक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं. फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? It remains No change. constant. Yes. So क्या होगा? The overall effect is neutralized and there is no significant change in resistance. So resistance almost constant में रहेगा. Almost constant में रहेगा. एक किधर यूज होगा? कनेक्टिंग वायर्स के हिसाब से यूज होगा. लाइक व्हेन यू आर डूइंग ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, आपको क्या होगा? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, राइट? बट बिकॉज ऑफ करंट पासिंग थ्रू कनेक्टिंग वायर्स, टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस विल चेंज. सो आपको फाइनल एक्सपेरिमेंट में थोड़ा चेंजेस आएगा. सो उसके लिए फॉर कनेक्टिंग वायर्स दे विल यूज दिस मैंगनीन, नाइक्रोन, कॉन्स्टेंट. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज आल्सो देयर नो इफेक्ट इन रेजिस्टेंस. सो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? ग्राफ as temperature increases, resistance will not change. कैसा रहेगा ग्राफ? Constant. कांस्टेंट रहेगा. ओके, बट हो गया ये वाला कॉपी. बट क्या होगा? इट विल बी स्लाइटली वेरिंग होगा था ऐसा. भाई alloys means what? मिक्सिंग ऑफ सम मेटल्स, नॉन मेटल्स, राइट? सो थोड़ा चेंज होगा. एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसा स्लाइट, बट जनरली वी कैन ट्रीट एज कांस्टेंट ओनली, नो प्रॉब्लम. ओके, ले लो. नाउ for conclusion क्या है? Finally, by seeing the graph, you can able to identify it. This is for conductors. This is almost constant wala alloys, and semiconductors are in inverse relation. Okay, we already drew, right, this one. Chalo, next. Now we temperature, new topic है temperature coefficient of resistance or resistivity. Temperature coefficient of resistance or resistivity. So क्या होगा? You understood that as temperature increases, resistance will change. In conductors में क्या हो रहा है? Increase होगा. Semiconductors में decreases and alloys में constant. Okay. Now question is कितना increase होगा और कितना decrease होगा? That one I want. Okay. Suppose I told the initial resistance is 5 ohm. If I increase to 20 degrees Celsius, कितना resistance increase होगा? Value I want. Qualitatively नहीं है, quantitatively asking. So for that के लिए this concept is necessary. Okay. Temperature coefficient of resistance. Okay. So इसका symbol is alpha. Temperature coefficient of resistance is alpha. Okay. So मान लो some material, it can be connector होने दो,
alloys होने दो, but general formula we have to use, right? Not only for conductors, right? Some material का resistance is R0 and temperature is T. Initial एक conductor का कोई भी एक some material, so it can be anything, some material का. Now क्या किया? I increase temperature from T to T plus dt. I increase temperature T to T plus dt. Then resistance got changed definitely. R to R plus dr. See, dr can be negative, it can be semiconductors. Dr can be positive, it should be conductors. Dr can be 0, it can be resistance. Same. Okay. Now, experimentally, they found this change in resistance is directly proportional to change in temperature. More the change in temperature, more the change in resistance, right? And this dr is also proportional to the initial resistance or not. इस पर भी डिपेंड होगा इनिशियल रेजिस्टेंस बड़ा वाला लिया तो ज्यादा चेंज हो रहा है, इनिशियल वाला छोटा लिया तो सेम टेम्परेचर, सेम चेंज इन टेम्परेचर में रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड. ओके, सो इफ आई रिमूव प्रोपोर्शनलिटी, dr is equal to प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया तो वो भी सेम सिंबल ऐसे रहेगा, अल्फा R0 dt is a small change in resistance, alpha R0 dt, right? Now I want to find total resistance of the wire. टेम्परेचर की वजह से टोटल चेंज क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने वाला है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. हियर dt बोल तो टेम्परेचर लिमिट्स, dr मींस रेजिस्टेंस का लिमिट्स वी हैव टू यूज. ओके, सो dt का इनिशियल टेम्परेचर Ti मान लो एंड फाइनल टेम्परेचर इज Tf. एंड इनिशियल टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हाउ मच यू टुक, R0, and final temperature में you take as RF, right? Now integrate करो. So here dr का will be R, RF minus R0. So RF minus R0 is equal to alpha R0 will be coming outside, and dt का integration is T, so Tf minus Ti, Tf minus Ti. Okay, so RF is equal to, ये माइनस R0 को इधर लेके आ रहा हूं, R0 कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस अल्फा, इसको मैं क्या करूंगा, डेल्टा स्मॉल टी डाल लूं. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. RF is equal to R0 into 1 minus alpha delta T. Very important formula. R0 into 1 minus alpha delta T. Delta T is nothing but final temperature minus initial temperature. R0 is the initial resistance, जो भी स्टार्टिंग में दिया ना प्रॉब्लम्स में, दैट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस. एंड वो बोलेगा टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या होगा बोल के बोलेगा. ओके, एंड हियर अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फा एंड अल्फा का यूनिट्स आर, ऐसा यूनिट्स क्या होगा अल्फा का, डिग्री सेल्सियस इनवर्स. Degree Celsius inverse. You tell me here temperature, change in temperature, we have to use Kelvin or Celsius? बोलो. Change in temperature we have to use Kelvin or Celsius? न्यूमेरिकल्स में अगर सेल्सियस में दिया तो we have to convert into Kelvin, केल्विन दिया तो convert into Celsius. कैसा? So it doesn't matter, right? Because we're taking the difference. डिफरेंस लिया तो क्या होगा? So whether you add 273 or not. yes. देखो, इनिशियल अंडरस्टैंड करो, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, राइट? इनिशियल टेम्परेचर मान लो 273 केल्विन, हियर 275 केल्विन मान लो. ओके, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, टेल मी हियर, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? 273 केल्विन मींस माइनस 273 करने का, राइट? सो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. हियर minus 273 करो, 2 degree Celsius, right? What is the change in temperature here? 2 Kelvin. What is the change in temperature? Same 2. मतलब आपको change in temperature is always same.
आइदर केल्विन और सेल्सियस, जो न्यूमेरिकल में नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग एनीथिंग, जो दिया है वो डाल दो. Change in temperature is always same. In thermal properties of matter में we studied, right? This one, change in temperature of Kelvin is same as degree Celsius. And this alpha is not same that one. Thermal coefficient of resistance वो वाला different है, ये वाला alpha different है. Temperature coefficient of resistance this one. तो फॉर्मूला बैठ करो. I'll ask RF is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. हाँ साथ दिखाना वीडियो. Sir, हाँ. isn't this contradicting in the case of alloys? Error sir. Because R is alloys. Okay. Sir, because you said R would be constant even if you change the temperature. हाँ terms एलॉयस of- in का case- टेलिंग. देखो dr is how much, एलॉयस में चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना. dr is how much? Zero. Zero. Original distance only. Okay, so it remains same. Same. So all formula we can use here in this one. Okay. Okay. चलो. So this is the formula for resistance and thermal. So formula आगे बोलो. RF is equal to, बोलो चुंगे. R naught into 1 minus alpha delta T. Yes. आप बोलो. RF is equal to. R naught into 1 minus alpha delta T. Yes. One. So ये थोड़ा mistake किया we done. Some mistake we done. R 1 plus, right? Sorry, 1 plus. Plus है. ये इधर आए तो R 1 plus है ना. हाँ. So बैठ करो. R naught into 1 plus alpha delta T is the formula. Tell me. R naught into 1 plus alpha delta T. This is famous formula. Okay. चलो. No questions करेंगे. A copper coil has a resistance of 20 ohms at 0 degree Celsius. So मतलब initial resistance कितना है? R naught is given as 20 ohms. Initial temperature Ti is given as 0 degree Celsius. Now क्या किया? If the resistance of 26.4 ohms at 80 degree Celsius, मतलब RF is also given 26.4 ohms and temperature TF is given as 80 degree Celsius. Find the temperature coefficient of resistance. Alpha is how much? RF is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. Use करो. Four into 10 power minus 3. Yes, 4 into 10 power minus 3 degree Celsius inverse. Degree Celsius inverse. Got? Next. A metallic wire has a resistance 120 ohms, this much. Find the temperature at which the resistance of the same metallic wire rises to 240 degrees Celsius and alpha value also given to you. So you're asking find the final temperature. TF is telling to find.
Sir, 5020. Very good. Correct. 5020 डिग्री सेल्सियस है शिवंगी? यस। चलो, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको फाइनल आंसर होने के बाद अल्फा फाइंड करने के बाद दे विल टेल वेदर विच टाइप ऑफ मेटल इट इज, कंडक्टर एलॉयस सेमीकंडक्टर। बेस्ड ऑन अल्फा वैल्यू आल्सो वी कैन टेल। देखो, अल्फा is positive value, okay, that means it is nothing but conductor, positive value, and थोड़ा larger रहने का ज्यादा value, okay, and this इसमें देखो alpha is negative, that means it is semiconductor, this is what conductor। नहीं, इसमें देखो पॉजिटिव एंड स्मॉल, देखो 10⁻⁶, मतलब कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल है, सो बहुत स्मॉल वैल्यूज इज नथिंग बट एलॉयस। So based on the alpha value also, we can tell whether which type of metal it is. टॉपिक वाइज करो, अभी ये टॉपिक हो गया, टॉपिक मॉड्यूल आपका मॉड्यूल्स निकाल के वो टॉपिक का खत्म कर लो, हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा ओके कैसा कर रहे हैं क्या बोल के। ओके चलो नेक्स्ट। The resistance of a platinum wire is 5 ohms at ice point. Ice point is how many degrees Celsius? Ice means 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius. Okay, and this much and steam point, matlab 100 degrees Celsius. When the wire is inserted in a hot bath, resistance of the wire is this much. Calculate the temperature of the bath. Here alpha is not given, right? So first two conditions use करके alpha find करो. That alpha use in the this one. First and last condition use करके alpha find करो ये वाला. Find the wire. He's asking calculate the temperature of the bath. Final temperature is so much. Sir, 160 degrees. 160 sir, वाह सुपर। टुडे आज क्या क्या है? What you ate? All answers जैसे बोल रहे हैं। Okay, चलो। You got same answer? Yeah. Okay, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करो। इससे थोड़ा वन कंक्लूजन आएगा। It is designed to make 20 ohm coil of wire. आपको एक वायर बनाने का 20 ohm चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस शुड बी 20 ohm, which has a zero thermal coefficient of resistance. Okay, alpha of combination is 0. To do this, what is done? Carbon resistor of resistance R1 is placed series with the iron resistor of resistance R2. So one is carbon resistor of resistance R1, iron resistor of resistance R2 connected in series. मतलब क्या किया? He combined with the two metals, two substances. कौन सा है? One is carbon, one is iron. Okay,
the proportions of the iron and carbon chosen such that R1 plus R2 is 20 degrees for all temperatures. मतलब very important. What is saying? इसका resistance R1, इसका resistance R2, right? R1 plus R2 is given as 20 ohms. It is same. If we change the temperature also, this combination is becoming the same. Is telling. उसका meaning क्या है? Tell me. It is same. Why it is same for all temperature? ये भी change होगा, ये भी change होगा ना resistance. If I increase the temperature, this both will change. Then why the combination will be same? बोल रहे? Can you guess? Tell me. So Why the because resistance? it'll form an alloy, and that's why. One is carbon is actually it is a semiconductor. Minus में देखो alpha is minus. And R2 का iron is positive metal. So one is decreasing, one is increasing. So almost दोनों को combination में same हो रहा है. So that is important. For all temperatures, it is constant. This value is constant. That means what is saying? Initial resistance R1 plus R2 initial is equal to if I changes to temperature delta T increase किया suppose, final temperature also will change. मतलब दोनों combination will be same. Initial resistance will change, but दोनों को combination will be same, right? Initial resistance is equal to final resistance. दोनों को combination same. Now इसको मैं ये R1 plus R2 is 20 is equal to RF का फॉर्मूला क्या है? R0 into 1 plus alpha is alpha 1 delta T. सपोज मान लो डेल्टा टी चेंज किया प्लस R0 into 1 plus alpha 2 delta T, right? Now मैं ये रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका रेजिस्टेंस इज R2, right? Because R1 R2 दोनों रेजिस्टेंस आर गिवन टू यू. Okay, so 20 is equal to R1 plus R1 alpha 1 delta T plus R2 plus R2 alpha 2 delta T. So R1 plus R2 is 20 only. This 20 can cancel. And इधर क्या आएगा? R1 alpha 1 delta T. So delta T common लूंगा. R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 is equal to 0. Here delta T be 0. Therefore, we can use this like a formula. R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 is equal to 0. Use this one. R1 value, we have to find R1 and R2 finally. We have to find R1 and R2. So alpha 1, alpha 2 value substitute करो, one equation आएगा. You substitute in this, you'll get the one more equation. Okay. ये दोनों variables दो equation solve करो. So this is the formula you have to remember. Whenever initial distance and final distance is same for all temperatures he told. Say, then we can use R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 is equal to 0. I placed in formula sheet also. ये वाला add करने का. R1 alpha 1 plus R2 alpha 2 equal to 0. लगाओ no. R1 into alpha 1 is minus 0.5 into 10 to the power of minus 3 plus R2 into iron ka 5 into 10 to the power of minus 3 equal 0. So 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 3 will cancel. So minus 0.5 is nothing but 1 by 2, right? So minus R1 by 2 plus 5R2 equal 0. So LCM लिया तो 10R2 minus R1 is equal to 0. Therefore R1 के जगह में 10R2 can substitute and find the R1 R2 value. So from this what you got? R1 is equal to 10R2. So substitute in this equation. So कितना आएगा आंसर? So 10R2 plus R2 is 11R2 is equal to 20. R2 is equal to 20 by 11. If I substitute here, R2 के जगह में 20 by 11 लगाए तो R1 कितना होगा? 20 minus 20 by 11. So कितना होगा? Correct only. 20 by 11. So 220, 200 by 11. Oops. So these are the two resistances. So whenever he says temperature is constant, all temperatures में the value is same बोल के बोला, then we can use this one R1 alpha 1 plus R2 alpha 2. If 3 है तो R3 alpha 3 use करेंगे equal 0. Okay. चलो. Now
we done about this all things. Now we have to enter into the combination of resistances के बारे में जाने पड़ेगा. That is easy, right, for you? Before that, Ohm's law is there. Ohm's law कर लो हो जाएगा. Then we go for combination of resistance. That is easy. Ohm's law मालूम है. What is Ohm's law? Tell me. Definition. Anybody? सादी कहते हैं Ohm's law. हाँ. अरे Ohm's law भगवान का law forgot. Okay. V is The equal to potential difference across the ends of the connector is directly proportional to electric current at constant temperature. V equal IR, Ohm's law, that only, right? So what is saying? The potential difference is directly proportional to current at constant temperature. Temperature is constant, then only we can use this Ohm's law. So more the current, more the potential difference, right? That means indirectly, a dietration. If I use this connector ka V and current I, okay, so then इसमें क्या होगा? V is proportional to I. When I remove proportionality, we'll get V equal to IR. Ohm's law. Okay, R is here constant, right? Proportionality remove करने के बाद constant आया, that is called R resistance. If I draw the graph of V versus I, tell me we'll get a straight line. And what is this line indicates? This line indicates what? A line indicates क्या है? इसका Resistance. The slope is up. resistance. Okay, we done slope में I told, right? Slope is x-axis से कितना angle the line is there. उसका tan theta is called slope, right? Slope is tan theta, and tan theta is nothing but opposite by adjacent. Opposite is nothing but V by I. V by is nothing but resistance. So that's why slope of VI graph gives resistance. Slope of VI graph gives resistance. I told you in 10th class में VI. So resistance दोनों है here RA, RB. So which is having more resistance? Which is having more resistance? RA. More than RA is greater than RB. If it is ulta, I and V किया तो RB is greater than RA. Okay. Okay. Then no. We will prove Ohm's law also by using this Vina wala formula. I is equal to VDNA. Okay. So tell me, I is equal to VD के जगह में EV by ML into tau A, tau, right? E into NA. So from this V by I is equal to what? V by I is equal to ML by NE square tau A, right? And V by L is nothing but resistance, right? वो देखेंगे. देखो इसमें for a fixed temperature में N is constant, tau is constant, and remaining are also constant for fixed temperature में, right? That means I can write like this: V is equal to some constant times I. That means V is proportional to I at constant temperature. Otherwise, temperature constant नहीं है तो N will change, resistance will change. There is no constant. So Ohm's law is valid only at constant temperature only. This is Ohm's law derivation. Okay. Now we'll write Ohm's law in vector form. Ohm's law V equal to IR is a scalar form. Now vector form में देखेंगे. Okay. So V is equal to IR is a scalar form. So V is equal to I into R के जगह में rho L by A. Rho L by A.
नाउ मैं क्या करूंगा, आई एम स्प्लिटिंग, एल को नीचे फेंकूंगा, V बाई एल इज इक्वल टू I बाई ए इंटू रो, राइट? यू टेल मी व्हाट इज V बाई एल? V बाई एल विच क्वांटिटी फॉर कंडक्टर? E. Electric. E, electric field, right? So E vector is equal to I by A means which one? I by A, J. J vector times rho. So this is also Ohm's law only. E is equal to J rho is Ohm's law. Exam में they will give resistivity and current density they will give. So that time electric field find करो बोलते, electric field बोलते हम लोग we will go for that one, K Q by R square बोल के देखेगा, ऐसा नहीं. Whenever they given current electricity chapter है, इसमें Ohm's law only. This is the first form of Ohm's law. And we have one more terminology called conductivity. Sigma, we represent sigma, we call as conductivity. Okay. So resistivity and conductivity का relation है, rho is 1 by sigma. Now substitute in this equation में, E is equal to J into rho के जगह में 1 by sigma. So sigma into J is equal to sigma into E is second form of Ohm's law. ये रो को में इस तरफ फेंका, sigma E, so J equal to sigma E. Sigma is called conductivity, rho is resistivity. Okay, these two are vector forms. So short form में remember करने के लिए आपको V equal IR is a formula, right? Is a formula of scalar phi, तो याद होगा ना. पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स में भी पोटेंशियल का दूसरा वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, करंट का वेक्टर फॉर्म में J आएगा एंड रेसिस्टेंस का रो आएगा. सो E इज इक्वल टू J रो इज द फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म याद रखने के लिए. हम उसका 1 बाय रो किया तो सिग्मा आएगा. ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. कौन से कंडक्टर्स है? कौन सा? ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ओमिक क्या है? ओमिक मींस, ohmic conductors means name itself indicates ohmic That means follows Ohm's law, which obey Ohm's law. Okay, V उसका ग्राफ कैसा रहेगा? VI ग्राफ will be straight line. उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस, as temperature increases resistance will increase. Okay, समझ में है? temperature increases resistance increases ऐसा. But non ohmic बोल तो not obey Ohm's law. वैसा there is a one graph, one dividing वाला है वो करने का. Yes, देखो. Okay, small only, right? See definition, ohmic conductor means which obeys Ohm's law. A वाला does not obey Ohm's law. इसका VN graph is direct relation. इसका V is not directly proportional to current. And इसमें क्या होगा? Straight line passing to origin. VI graph अगर मैं draw करूंगा, it is always straight line passing to origin. ये वाला non linear curve आएगा. Examples, if you see copper, aluminum, silver, these all conductors में ये VI graph Ohm's law is valid. But they are diodes, which we studied in the semiconductors chapter में. Diodes, transistors, thermistors, this all does not obey Ohm's law. Non-linear curve रहेगा. Okay. And in this में ohmic में V equal IR. Here no equation, no simple equation will be there. And as temperature increases, resistance will increase. But इसमें it may increase or decrease होगा. जल्दी लिख लो. So ये खत्म करके विल गो फॉर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्योंकि इनका केमिस्ट्री है ना.